Students, today we'll go with the poem The Moon. The moon has a face like the clock in the wall. She shines on the thieves on the garden wall, on streets and fields and harbor quays, and birdies asleep in the fork of the trees. The squalling cat and a squeaking mouse, the howling dog by the doors of the house. The bat that lies in the bed at noon, all loves to be out by the light of the moon. But all the things that belongs to the day, cuddle to sleep to be out of her way. And flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall arise. Now let me explain the poem for you. I'll explain the first paragraph first. The moon has a face like a clock in the hall. She shines on the thief on the wall, on the garden wall, on streets and fields and harbor quays, and birdies asleep in the fork of the trees. This means the moon is compared with the shape of a clock on the wall. मून को किस चीज़ के साथ कंपेयर किया गया है? क्लॉक के साथ. ओके. एंड जैसे क्लॉक हमें टाइम बताता है, ऐसे ही मून भी हमें बताता है कि इट्स अ नाइट टाइम, राइट? नाउ शी शाइन्स ऑन द थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर क्वेज. दैट मीन्स what the moon does, it sees the thieves stealing at night. मून की नज़र किन पे होती है? चोरों के ऊपर भी होती है कि वो लोग रात को चोरी कर रहे हैं. एंड ऑन स्ट्रीट्स, ऑन फील्ड्स एंड इवन इन हार्बर क्वेज. हार्बर क्वेज मतलब इट्स अ रिवर वेयर द बोट्स कैन बी टाइड अप. वो रिवर का साइड है जहाँ पे बोट्स को बांध के रखते हैं सामान लोड और अनलोड करने के लिए, राइट? Just like that, moon sees everything at night. It also sees the birds sleeping on the tree. Now coming to the second paragraph, the squealing cat and the squeaking mouse, the howling dog by the door of the house, the bat that lies in the bed at noon, all loves to be out by the light of the moon. मतलब क्या है इसका? In this paragraph, what is showing? It's showing the silence of the night, which is compared with the, it's not compared, it's just showing that in the silence of the night you can hear different sounds of animals like squealing of cat, squeaking of mouse and howling of dog. मतलब अलग अलग जानवर की आवाज़ आप तब सुन सकते हैं जब नाइट होता है, बिकॉज नाइट में सब कुछ साइलेंट होता है, राइट? नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट पैरा. बट ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे cuddle to sleep to be out her way, and flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall arise. इसमें क्या बताया है? The children and the flowers are asleep and they are not able to see the beauty of the moon and the light wherever it falls. Whereas the animals, they are sleeping under the moonlight, so they can enjoy the moonlight. यहाँ पे क्या बताया गया है कि बच्चे और फ्लावर्स सो जाते हैं रात को, so they can't see the beauty of the moon and the light. But animals जो बाहर सोते हैं, they can enjoy the moonlight, right? Now this is the summary of the poem. Read the poem, write the poem once and learn the poem. Okay? Have a nice day, beta.